अभी लगेज सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो लगेज सेटअप के लिए हमारे पास है टीवी का पैनियर्स 37 लीटर्स पैनियर्स है और टॉप बॉक्स 43 लीटर्स का है। तो इसमें प्रेडोमिनेटली बहुत सारे लगेज हम इसमें रख देंगे। इसके साथ साथ लगेज जब हम बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोथ्स। फॉर अ यूट्यूबर कंटेंट क्रिएशन के लिए हमको गैजेट्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि हमारा ड्रोन हुआ हो या फिर कैमरा हुआ हो या फिर गिम्बल हुआ हो या फिर आपका गोप्रो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखना पड़ता है और बहुत संभाल के हर एक चीज़ को रखना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी चीज़ आप मिस करके चले जाते हो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम ऑन द गो। और लेस ये सारे गैजेट्स हमको ये तीनों एसेसरीज में आ जाना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे पास है ट्रैक एंड राइड का क्रैश बार बैग्स, दोनों तरफ के बैग्स हमारे पास है। तो मोस्टली जो टूल्स हम कैरी करने वाले हैं तो वो टूल्स उसमें आ जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स या वाटर बॉटल या फिर जो भी है वो बैग में आ जाएगा। इसके साथ साथ ट्राइपॉड भी कैरी करना पड़ेगा जो मे बी रेस सीट पे मैं बांध दूंगा। जैसे कि आपका गैजेट्स हुआ हो तो इफ इन केस यू वांट टू शूट, यू वांट टू टेक अ ड्रोन शॉट और एनीथिंग, व्हेन यू स्टॉप एंड रियली वांट टू डू इट थिंग्स क्विकली, तो आपको ऐसा प्लान करना है कि यू हैव टू प्लेस इट इन सच अ वे कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली यू कैन पिक देम अप एंड स्टार्ट शूटिंग योर कॉन्टेंट्स। एंड ऑल्सो व्हेन यू गोइंग for a long trip, it's so important that not only your luggage or the bags what you carry, the most important thing of your ride should always be taking care of your machine as well. तो with respect to the machine मैंने बाइक का सर्विस करवा दिया है, जैसे कि आपका ऑयल चेंज हो चुका है, चेन स्प्रॉकेट चेंज हो चुका है, ब्रेक पैच चेंज हो चुका है, कूलेंट फिलअप हो चुका है, टॉपअप हो चुका है। उसके बाद ब्रेक सिलेंडर्स दोनों टॉपअप कर दिए हम लोगों ने। तो जो भी चीज़ बाइक के साथ रिलेटेड हुए हैं, you need to make sure कि you take care of the bike first and then take care of any other thing. The healthy this is, the better your ride is going to be on the road. ये अगर स्क्रू अप हुआ ना, योर एंटायर प्लान इज गोइंग टू गेट स्क्रूड अप। सो मेक श्योर, स्पेशली व्हेन यू आर मेकिंग अ बिग राइड्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेकिंग अ गुड केयर ऑफ योर मशीन। जैसे कि हमारा बैटरी हुआ हो, बैटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिकॉज लद्दाख में जहाँ कुछ जगहों पे यू माइट बी एंडिंग अप हैविंग -2 और -3 डिग्रीज, तो वहाँ पे जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो इट शुड स्टार्ट rather than giving you any hiccups at that moment. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से टायर्स, अगर आपको टायर्स चेंज करवाना हो तो टायर्स भी चेंज करवा लीजिएगा। फॉर दिस राइड आई एम नॉट चेंजिंग द टायर्स बिकॉज ये अभी सिर्फ 5000 या 6000 किलोमीटर हुए हैं। तो दिस विल ऑल अगेन रन फॉर अनदर 9 to 10,000 किलोमीटर। सो इसीलिए वापस आने के बाद मोस्टली मैं टायर्स चेंज करूँगा, बट फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द टायर्स, दे आर इन अ गुड shape at this moment. Also one more thing I want to give you a valuable tip here is that make sure any modifications you're doing on your bike, make sure you do it well in advance, at least a month in advance, and take your bike out for 2 or 3 rides, a short ride, maybe a city ride also, that will also help. But make sure you do your modifications well in advance, do a bit of ride, so that if in case there are any concerns, that can be addressed and fixed well before your ride, rather than identifying them on the ride. That's what happened with us in the Ladakh ride in 2018 जब हम लोग यहाँ से निकले थे। हमारा जो सैडल स्टेज जो मैं कार्बन रेसिंग का यूज़ कर रहा था वो चेंज करके जाना का सैडल स्टेज और टॉप रैक डलवाए थे। एंड ऑन द राइड डे वी आइडेंटिफाइड कि जो रॉड नीचे से जाता हुआ है, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात किए थे, जो रॉड नीचे से जाता है फॉर सपोर्ट ऑफ योर टॉप रैक, दैट इज़ एक्चुअली हिटिंग योर टायर। बिकॉज मेरा टायर जो है प्रोफाइल 150/60 का जो डोमिनर का स्टॉक प्रोफाइल है, बट मैंने जो टायर टिम्सन का डलवाया था वो 150 and 70 का था। तो बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा इट इज हिटिंग दैट दैट हैज़ गिवन अ नाइटमेयर। तो सोचो कि जब हम लोग घर से निकले थे, दैट्स व्हेन वी हैव आइडेंटिफाइड, इमेजिन कि वो सिचुएशन कैसा हुआ हमारे लिए। तो दैट्स अ बिग लेसन व्हाट आई हैव लर्न, आई नो दिस इज हाउ वी लर्न एक्चुअली। सो इसीलिए इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट वी well in advance make all those changes. So those are the setups what we have done, that's the prep up what I've done on my machine. There are small stickering what I've done on my bike as well, जैसे कि जैसे कि अपना फोर्क सस्पेंशन पे, फ्रंट फोर्क सस्पेंशन पे मैंने ये स्टिकर्स लगवाए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का ID लगवाया है। उसके बाद छोटा मोटा स्टिकर्स करवाए हैं, पैनियर्स पे स्टिकरिंग करवाए हैं हम लोगों ने फ्रॉम JC रोड, शान ग्राफिक्स से हम लोगों ने ये करवाए हैं पूरा काम। एंड ओवरऑल टू गिव अ गुड लुक to the bike and have a take a good pics of the bike. That's the whole
purpose, make your ride as memorable as possible by shooting a lot of content, by taking good pics, sharing it with you guys also, and making you guys happy as well along with myself. So overall, I think that's pretty much what I have to share with you guys in this particular video, जहाँ पे मैंने try किया है कि to share this information which might be helpful for you guys, which might give you some insights if in case you are also planning for some big rides. These are the things which I've learned over a period of time as part of my riding experience, so I thought I'll share it with you guys, and also share how I've prepped up my machine with both accessories and etc etc. If you have any questions, put it in the comment section. Also, you can connect with me on my Instagram handle. Instagram handle is here, and also I'll put it in the description as well. This is going to be the last video before our Ladakh ride, and we will kickstart the Ladakh episodes once I'm back from the Ladakh. And this might take a bit of time because I'm back. I need to take care of my work, my family, and then the passion. So this might result in a bit of a delay, but you don't go anywhere, and I promise that I'm going to bring you kick-ass content on this channel. And yeah, if in case you have not yet subscribed to the channel, please consider subscribing to the channel. And yeah, overall that's pretty much what I have in this video. Yeah, thank you very much once again for watching this video. Live life, keep traveling, follow your passion. Signing off, Raj. I'll see you again in the next video. Let's start the Ladakh ride on a great note. Jai Hind. Bye bye.